welcome to CDC Mentors. I have one of my students, Aishwarya. She joined us for CAT 2019 online coaching. And quite interesting story, like how she started from 50 percentile, went on to get around about 15 IIM calls, if I'm not wrong, and then 4 IIT calls. Then, a couple of calls from Symbiosis B School, and finally converted IIM Kozhikode as of now. And I hope I did the pronunciation correct, Aishwarya, because she was the one, like I used to call IIM Kozhikode as like IIM Kozhikode, and she's like, once she told me, Ketan, it's not Kozhikode, it's like, it's pronounced as Kozhikode. I was like, so theek hai. So, and finally you converted that. So yeah, congratulations and welcome on board. I would love to hear your story. I remember, we connected last year over a phone call, and that's how I sort of guided you. So before we move ahead, I want to kind of start with your profile, and then you can probably make a mention about the mentorship that we got a call on, and we'll move ahead with the interview. So over to you. Yeah, thank you, sir, and thank you so much for inviting me here. So I'm from Nagpur, and my education 10th and 12th and graduation also is done from Nagpur itself. So last year in the month of March, I resigned from my job. I was working in Ahmedabad and I was having a happy life there. But then I decided that I have to give CAT 19, and after that I resigned. And from the month of April, I started preparing. Actually, I was preparing for basics. Then later on, I watched one of your video. It was for JBIMS MSc Finance, and that's how I got to know about you. And I immediately actually called you after that to get to know about this MSc Finance. Yes. So, but उस वक्त actually my CET score wasn't so good क्योंकि मैं resign करके आई थी 5th of March को on my hometown, and CET था 9th of March ko, and just I had 4 days, and in the 4 days I could score just 92 percentile, but that thing taught me that कि हाँ मैं कर सकती हूँ, CAT में अच्छे से दे सकती हूँ. So I started again preparing for CAT, but actually when CAP rounds were going for CET, I called you. If you remember last year on July, I called you and I asked you that how is SIIS college? Should I join this college or not? But you told me, see, you have that potential. Means actually you got that potential. You can do better, and that's how I started preparing for CAT. And actually not just CAT, I was also preparing for other competitive exams. Means I was actually preparing for banking exams and other technical exams. So banking exam also helped me to clear my basics. And actually the bank में कैसा होता है sir कि you have to solve 100 question in 60 minutes. So उसकी वजह से मेरा time management बहुत अच्छा हुआ. So that thing also helped me towards this. And I even joined in the month of July for your classes. So I was actually really bad at verbal. So your strategy really helped me. That para jumbles and reading comprehension की जो आप जो technique बताते हो, that really helped me. Quants, actually maths तो मेरा पहले से ही favorite था, तो I wasn't afraid of quants. And DLR तो is it's all on the practice, so you have to. But it's scored decent in quants actually. It is around close to 98 percentile if I'm not wrong. So yes, quant ka percentile is good here. Yes, actually quant is the only section जिसमें मुझे पूरा faith था कि मैं पूरा engineer हो ना आप लोग तो मतलब नहीं it's not because I'm engineer. I don't think if मैं engineer नहीं होती तो भी ऐसा नहीं होता, because I love math from childhood. So and actually JEE preparation also helped me for the तो पता था कि formulas create कैसे करना चाहिए, मतलब formulas learn करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. I could easily just so Aishwarya, from this point of view, sorry to interrupt, but I just wanted to ask this question. What is your advice for students out there जो quants को अभी start करना चाहते हैं? Because कुछ बच्चे जिनको quants आता है, कुछ बच्चे जिनको quants का phobia है. What's your advice कि कैसे ideally आपने एक preparation करनी चाहिए quants की? मैं थोड़ा डिफरेंट आंसर दूंगी. एज आई सेड कि मैंने दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर किया था. मैं जब आई थी, मैं जब अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, मुझे एक्चुअली आई हैड ओनली 2 mentors. One is you and another is my elder brother. So he was also preparing for other exams. तो उसने उसकी एसएससी सीजीएल की बुक मुझे दी मैथ्स का सॉल्व करने के लिए. So I solved that the whole volume of that maths book
in the 2 or 3 months. तो उसके वजह से मेरे पूरे बेसिक्स क्लियर हो गए थे. मतलब ऑलरेडी Okay. I knew about the quants syllabus, but उसके वजह से मेरी प्रैक्टिस अच्छी हुई. उसके वजह से मुझे बाद में कैट के लिए ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं हुई. तो आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड विद दैट. तो मैं स्टूडेंट्स को Okay. यही कहूंगी कि जस्ट गो विद द बेसिक्स फर्स्ट एंड जस्ट गेट टू नो कि हाउ फॉर्मूलेज आर क्रिएटेड. अगर आपको वो पता चल जाएंगे तो इट विल बी इजी. मींस कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों आ जाए, यू नो हाउ टू सॉल्व इट. मींस यू विल गेट Okay. दैट. So, were you used to make notes of DILR, verbal or quants, or like कि बस एक बार solve हुआ तो solve हुआ, or did you also practice questions again and again, or like what was your strategy? When I was solving that book, तो जो normal questions तो ठीक है, I used to solve it by myself. जो भी difficult questions थे, I used to check the solution, and I had different register for that, and I used to note all those questions. तो वो Okay. फिर बाद में मैं रिवाइज करती थी, जब भी वीकली या मंथली फिर मैं रिवाइज करती थी. So that's how I kept those questions differently. Okay. So verbal was your major problem. I know verbal, you were like shit scared of verbal. And, Yes, I so never. anyway, right. What was your strategy for verbal preparation? Like, predominantly, like, जो भी हमने live lectures में जो भी हमने कराया था, definitely, you are from Nagpur, so you couldn't join me in Pune. So, जो भी हमने करा था, RC हो गया, parajumble हो गया, para completion, different type of RCs and all that. How did you apply those strategies, and how it helped you actually? Sir, I honestly tell you, वो जो पैराजम्बल्स का वीडियो था ना, मैंने आपका यूट्यूब पे ही देख लिया था. वो तो मुझे पहले ही देख लिया था. दैट फ्रॉम देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर पैराजम्बल्स. तो पैराजम्बल्स पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि ओके आई कैन डू. बस एक दो हुआ गलत, उसकी एक्यूरेसी मोस्टली तो अच्छी रहती थी. एंड आरसीस आरसीस में जो आपने मुझे स्ट्रेटेजी बताई थी कि जस्ट टू चेक दोस वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव Right, करना, right. that Typical that words. really helped. Yes. Right. So you could see a little bit of increment in your score overall over the period of time in mocks as far as verbal is concerned. Yes, Okay. I saw Now, that. coming back to the D day, because verbal was monster. So what was your reaction when you saw verbal on the screen कि भाई ये बहुत heavy है? कुछ recollect हुआ कि नहीं ये ऐसी चीजें हमने class में भी करी है पहले? So was it really easy for you? And let's just say, had it not been the lecture that you've joined with me, it would have been even worse. Like, what's your take on it? Yes, verbal was really difficult, but the thing was कि I did not get panic, and Okay. उसकी वजह से I could solve. I think मैंने 3 पैरास किए थे, and पैराजम्बल्स मैंने पूरे सॉल्व कर लिए थे. पैराजम्बल्स एंड the another one is I think para completion was वो मैंने पूरे कर लिए थे. And मुझे पता था verbal is not my game changer. मैं Okay. पूरा I was all relying on the DLR and quants. तो मैंने verbal पे ज्यादा इतना टेंशन रखा नहीं, और उसकी वजह से मैंने DLR and quants में अफेक्ट नहीं होने दिया था. So makes sense. So अगर आपको लगता है कि एक अगर मेरा weak area है, then what you can do is you can keep one as a strong area, then one as a medium one, and the one which is going to be least one. And it's good that कि मतलब जो area आपका खराब था वही मतलब ज्यादा tough आया, because you couldn't score a lot over there. I mean मेरे ख्याल से अगर थोड़ा ज्यादा easy भी आता, then also you would have been in the same bracket. But then what happened with DILR? Like how did you do in DILR? My DLR strategy was different. मैं मतलब जब मैं मॉक्स देती थी तो मैं जनरली रीजनिंग पहले सॉल्व करती थी, एंड आई यूज्ड टू पिक अप दो सेट्स कि मुझे पता था कि हाँ दे कैन बी गेट सॉल्व इजीली. तो मैं पहले रीजनिंग करती थी, देन आई यूज्ड टू मूव टुवर्ड्स DI बिकॉज DI वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी. बट कैट में उल्टा हुआ. DI वाज इजी एंड रीजनिंग वाज on the tougher side. So उसके वजह से मेरा DILR की strategy थोड़ा screw up थोड़ा हो सा गया. problem हुआ. Otherwise So it was. how many sets you used to solve as far as DLR is concerned, or as far as RC is concerned? Like कितना daily basis पे क्या पढ़ेगा schedule था? DILR से on a daily basis तो मैं every mock I used to solve nearly 4 sets. कभी-कभी 5 पे भी जाता था. And in RC's 3 paras mostly. Short paras 2, 3, and long paras 1 generally. On a daily basis, you used to do it, or like once in a week or something like that? So mocks Verbal actually preparation.
मॉक्स में मैं अगस्त से मैंने प्रिपेयर ज्यादा, मतलब मॉक्स मैंने अगस्त से देना स्टार्ट कर दिया था ऑन इंटेंस लेवल। Okay. तो वीकली 2 to 3 मॉक्स में देती थी। On the analysis perspective, love, from the analysis side, how you would analyze your mocks on a daily basis? Like whenever you used to give mock, how do you used to do the analysis? सर आफ्टर गिविंग मॉक, जस्ट आफ्टर 2 days और 1 day जब वो एनालिसिस आता था, आई यूज्ड टू सी कि मैं कहाँ पे गलती करी एंड व्हिच क्वेश्चंस आई कुड सॉल्व बट मैंने वो सॉल्व नहीं किया था। आई यूज्ड टू चेक दोस एंड सेम गोस टू क्वांट्स। क्वांट्स एक्चुअली मैं एनालिसिस, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक, मैं क्वांट्स का ज्यादा एनालिसिस करती थी बिकॉज इट वाज माय फेवरेट Okay. सेक्शन आफ्टरवर्ड। Okay. तो दैट्स व्हाई एंड दैट वाज माय मिस्टेक। उसकी वजह से मेरा कैट ऑन द डी डे क्वांट्स ही अच्छा हुआ था। एंड तो whatever the question I used to solve it incorrectly, तो मैं उसको देखती थी कि कहाँ पे गलती हुई। I used to analyze and Okay. analysis is a very important, just mock exam is not the game changer। तो आपको Exactly. analysis तो करना ही चाहिए and जो भी questions आपको लगते हैं कि it will help me in future, you should note that। तो just Right. keep on register and note those questions, that will really help you। Okay. Okay. So before starting with CAT, right? Like, what was your target? कि ठीक है, मुझे top 20 में ही चलना है, top 10 में चलना है, top 15 में चलना है. What was it? Sir, actually, honestly, I will tell you, before my work, when I was in engineering, so actually that time also used to prepare for CAT, and I had no idea about other colleges because I only knew about IIMs and some top institutes. But after watching your videos, I got to know about other colleges as well. So उसकी वजह से मैंने अपनी खुद की एक लिस्ट बना के रखी थी top 15 to top 20 की, कि हाँ Okay. यही कॉलेजेस है जो मुझे टारगेट करना है बिकॉज आई कीप माय टारगेट हाई। मुझे जाना है तो टॉप 15 में जाना है, ज्यादा से ज्यादा टॉप 20, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ यू। आपके वीडियोस की वजह से मैंने देखा था कि विच कॉलेजेस आर डूइंग गुड एंड विच कॉलेज में कौन सा स्पेशलाइजेशन अच्छा है, Okay. एंड दैट्स हाउ आई क्रिएटेड माय ओन लिस्ट एंड यस थैंक्स टू यू एक्चुअली। So Now, on the other side, when we talk about sort of students who are not academically really sound, somebody who's not got 90 ever in 10th, 12th, and graduation, right? When these sort of students start preparing for CAT, they always have that kind of a fear कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं शायद से मैं जा पाऊंगा IIMs में या फिर नहीं जा पाऊंगा, right? Then बच्चा लोग starts thinking about कि ठीक है, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर ये मेरा प्रोफाइल है, मेरा ये IIM होगा क्या, मेरा XYZ IIM होगा क्या? What is your advice? Because when you are coming from that sort of academic background, right? Were you also scared कि मेरा IIM होगा कि नहीं, or you was like, you know what, जो होगा सो होगा, I am just gonna focus on my preparation? क्या था, like what was your attitude, so students can learn from you? See, when we were in boards, means 10th and 12th में, जब पता नहीं था कि ये स्कोर बाद में IIMs के लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, तो किसी को नहीं पता था। तो यस, किसी को नहीं पता होता। सबका वही हाल है। तो ठीक है, मुझे 10th में अच्छे था, आई स्कोर्ड नियरली 90%, बट 12th में बिकॉज ऑफ माई जेई प्रिपरेशन मुझे बोर्ड्स में उतने अच्छे नहीं थे, एंड हो जाता है वो नॉर्मली। एंड ग्रेजुएशन में आई डोंट थिंक एनीवन, मतलब इंजीनियर्स तो कभी पढ़ाई नहीं करते, तो ग्रेजुएशन में भी इतने अच्छे नहीं थे। So, but one thing you can do is you can build your profile. Right. I had profile. Actually, how I created profile, that's also an interesting story. Please tell us. Actually, I decided to go for CAT right after my second year of graduation. So Okay. I got some motivation from somewhere, and actually IIT was my dream before. तो तभी मैंने सोच लिया कि ठीक है IIT नहीं जा सकते, but I have another chance, IIM तो मुझे टारगेट करना है। So after that, हम अगर किसी को बता दें कि हाँ मुझे अभी कैट का प्रिपरेशन करना है और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो जनरली पीपल विल नॉट हेल्प यू एट फर्स्ट। वो आपका पहले मजाक उड़ाते हैं कि तुझसे होगा क्या कैट, तुझसे कैट होगा क्या, इट्स सो डिफिकल्ट एग्जाम एंड इंजीनियरिंग है, अभी क्यों और सामने जाना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो मुझे मेरे घर वालों ने पहले ताना मारा, पहले ही मुझे मम्मा और भैया ने कहा कि तुम्हें लोगों से बात भी करना आता है कि नहीं। So actually at first, actually I was really laconic before. अभी मैं इतना बात कर पा रही हूँ। That's the word I taught in vocabulary. Good. So actually I started socializing first. So after that, मैंने in fact
एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था. आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट इवेंट्स जिसमें प्रेजेंटेशन ज्यादा हो, तो आई स्टार्टेड गिविंग प्रेजेंटेशंस. और एक Nice. फनी थिंग है कि आई आल्सो यूज्ड टू हैंग आउट एट cafes, so just to get to know how new restaurants and the small business are working. So I used to Oh. just started noticing those things. And and in fact I was a part of one dance group. तो अभी तो मैं डांस नहीं करती, बट ईयरली आई वॉक ऑन रैंप, तो मैं उस पर भी कभी कभी पार्टिसिपेट करती थी. तो दैट्स हाउ आई डेवलप माई सेल्फ. एक्चुअली मैंने खुद को पहले डेवलप किया. And side by side I was preparing for CAT. I joined one classes just when I was in third year. तो मेरे बेसिक्स तभी क्लियर हो रहे थे सभी इसके Quants, LRDI. तो तभी भी मैंने VARC पे फोकस नहीं किया था. That was my another mistake. But yeah, I was preparing for that, and I'm not a multitasker. तो मुझे पता था कि मैं एक तो ग्रेजुएशन पे फोकस कर सकती हूँ, अदरवाइज या फिर कैट पे. तो एंड मेरा प्रोजेक्ट ग्रुप भी जो था सर, तो ऑल ऑफ देम वर टॉपर्स. मैं अकेली एक नॉर्मल सी थी, तो बाकी सब टॉपर्स थे, तो उनकी वजह से मुझे भी प्रोजेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता था. तो दैट्स फाइनल ईयर में मैं ग्रेजुएशन में मैंने ज्यादा फोकस किया. एंड कैट मैंने बोला कि इट्स ओके, आई विल गो फॉर वर्क. वैसे भी मुझे स्टडीज से ब्रेक लेना था, सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर वर्क. आई हैड 3 ऑफर्स फ्रॉम प्लेसमेंट्स. एंड उसके बाद मैं अहमदाबाद चली गई. आई हैड अमेजिंग लाइफ देयर, बट Yeah, you also have a work experience, right? You worked for like around about a year, if I'm not wrong. not a year, nearly 8 months. I worked for 8 months. Okay. And yes, that's how then I went to Ahmedabad, and I focused on my graduation first. And that's how I developed myself first. And उसके बाद फिर after when I was actually working, तो तब मेरा CAT का preparation नहीं हो रहा था. And that's why in 2018 I scored just 50 percentile around. So I know. हाँ, that फिर उसके बाद मुझे सीरियसनेस आई नहीं, अभी बहुत मस्ती मजाक कर लिया, अभी पढ़ना है. एंड मैं थोड़ा रिजाइन, मेरा पक्का था कि मैं मई या जून में रिजाइन करूंगी, बट बिकॉज ऑफ द अदर बैंकिंग एग्जाम्स एंड अदर टेक्निकल एग्जाम्स आई रिजाइंड अर्लियर. एंड आई केम बैक टू माई होम टाउन. एंड एक्चुअली मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने रिजाइन किया. नन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टिल नोज दैट आई एम इन नागपुर. उनको लग रहा है अभी भी अहमदाबाद में जॉब कर रही है. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ यू कि इट्स नॉट important to tell everybody that you are preparing, and जरूरी नहीं कि तुम्हारा फ्रेंड्स ग्रुप हो. You can prepare alone. I was preparing all alone. मेरे साथ कोई नहीं था जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था. I had only 2 mentors. जैसे मैंने कहा आपके साथ, आपको मैंने अपना मेंटर माना था. And my elder brother was also preparing. तो उसकी वजह से भी मुझे डिसिप्लिन आई. तो my daily routine was just to wake up, लाइब्रेरी को जाओ, लाइब्रेरी में जाके नियरली 8 to 10 आवर्स पढ़ाई करो, फिर घर आओ, घर का खाना खाओ एंड जस्ट सो जाओ. दैट वाज माय लाइफ. पहले तो 2 महीने बहुत डिफिकल्ट हुए, बट आफ्टर दैट यू कैन गेट अलोंग विद द सिचुएशन. Perfect. So let's talk about the mentorship, right? I'm very sure you must have seen a lot of YouTube videos, because it's a digital era and all that. So when you were following me, right, even like during CAT, like though you were my student, but it's kind of a tendency that students will definitely look out for a content, everywhere. Now, how did you find the content that I post on YouTube channel when it comes to CAT, or when it comes to the attitude building, that for CAT you should be focusing on topic and not running behind the score? Because this is what happens being an average student, right? We always kind of in a security, we always kind of try to find out a security कि यार अगर 100 मार्क्स लेके आऊंगा तो मेरा 90 बन जाएगा परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल में मेरे को एक ये कॉलेज मिल जाएगा. So like any comment on that, like was it a part of your preparation, or you decided कि नहीं यार I'll nail topic, I'll kick topic first, score का बाद में देख लेंगे? What was your attitude? Okay, first I will tell you about YouTube. Thanks to Google कि उन्होंने YouTube जैसा प्लेटफॉर्म बनाया, and thanks to you that you are creating such a nice videos. Thank you. जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर मई में मैंने आपका फर्स्ट वीडियो देखा, एंड इमीडिएटली आई कनेक्टेड विद यू. तो फिर तभी मैंने सोच लिया था कि डेली द ओनली वीडियोस आई विल सी इज C2C मेंटर्स वीडियो. तो ऑन अ डेली बेसिस में आपके वीडियोस तो देखती ही थी. प्लस एक्चुअली as I said, I was preparing for other exams also. तो फिर और एक्चुअली आजकल YouTube पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है. तो थैंक गॉड कि मैंने आपके वीडियोस देखे, और मैंने बाकी भी वीडियोस देखे. मैंने काफी रिसर्च भी की कि कौन से वीडियोस विल एक्चुअली हेल्प मी. बाकी वीडियोस आई सो
like the earlier one of your students said that it was a sugar coating. Yes, Sugar it coated kind was of thing. actually, same. So I found that videos were really helpful, और plus मुझे वो colleges की information मिलती थी, like and the CAT content जो भी आप post करते थे was really good. So I started following you. के पीछे तो पहले नहीं जाना चाहिए. It's Right. a score कि पहले and actually काफी लोग ना पहले ही mock दे देते हैं and फिर mock का score देख के demotivate हो जाते हैं. Demotivate हो जाता है, that's right. It's not like that. Okay, if you want to give a mock just to see how the paper pattern is, then okay, go for mock. But first clear your basics. Try to solve questions first. Try to solve sectional mocks. Then go for full length mock. Then that's what I want to say. और score is not actually होता है. मेरा भी सबसे पहले mock में अच्छा score आया था. Then what was your score and what was your percentile in first mock? That's what I wanted to ask you actually. On the very first mock, it was July month. तो उस वक्त मेरा आया था nearly 80. 80. हाँ, it was 80 and उसके बाद मेरा score actually gradually decrease हो रहा था और मैं खुद demotivate हो रही थी कि मैं preparation तो अच्छी चल रही है. What was the bottom that you touched? Score पे bottom क्या था? My God, it was I think 36. 36 marks. Yes, even I told you in one of the live videos कि मेरा score 36 है and you even read that one. I remember that clearly. 36. So, okay, fine. So वहाँ से you picked it up and finally. And actually you said कि it's okay कि आपका score अभी कम जा रहा है. It's okay कि होता है preparation because mocks के level भी उस वक्त बढ़ रहे थे. The level of difficulty was also on a higher level. तो होता है तो थोड़ा demotivation होता है but it's okay. Go for the score first and see कि कहाँ पे गलती हो रही है. Try to analyze your mistakes and then try to improve that. उसके बाद तो you can improve your score. And फिर बाद में percentile का game पहले तो आना ही नहीं चाहिए. That's right. पहले अपनी preparation होनी चाहिए. जितना अच्छा prepare करोगे उतना अच्छा percentile बन जाएगा. Now, one point it just clicked me. You made a mention in the same video that you were laconic earlier. Yes. Okay. How did you perform in your VAT and PI? Because I know I used to give me report कि sir मेरा इसका interview हुआ या ऐसा गया वो ऐसा गया. I still remember SIIB and SIBM Pune के बाद you called me up and you briefed me about entire interview. So how did you अरे मेरे ख्याल से तुम्हारा प्रोफाइल भी तुम्हें हेल्प करा GDPI के लिए. So how did you? I mean, like definitely you were like you joined my full program तो GDPI भी था. But then want to share a little bit of your GDPI experience? One thing I forgot to mention कि profile wise actually मैं एक बताना भूल गई थी कि before the last year मैंने ना योगा भी सीखा था. So that also really helped me. मैंने योगा के एग्जाम भी दी थी योग प्रवेश में. So I cleared that exam and I practiced yoga daily. So that also really helped. Helped me. So हाँ, I told you once that sir कि मुझे एक ना एक तो IIM call लाना ही है और मुझे आपके GDPI के classes join करना है. So for that I moved to Pune and actually I was also getting into this online courses. So आपके online भी थी मैं और बाद में I moved to Pune and GDPI. Yes, for क्योंकि GDPI. GDPI online होता है but अगर कोई बच्चा बॉम्बे महाराष्ट्र में अगर कोई बच्चा I mean like you came from Nagpur. I have students who travel to Pune and Mumbai from Delhi. They came from Kolkata, South. So yeah, so that's how you shifted. But I hope those lectures were helpful to you. Yeah, those were really helpful. And actually, I really liked आपने जो profile building के लिए बताया था. मुझे नहीं पता था कि the skills I have or whatever the certification I have done वो भी helpful हो सकती है. So I had no idea about this, but आपने वो बताया कि नहीं, this will really help. I kind of understand IIM कोई कोई का interview because that's the convert we have. Yes, so what happened वहाँ पे IIM K का interview कैसे गया था? मैंने आपको after my interview I even called you कि my interview wasn't as expected. Because IIM K का जो interview है ना मेरे ख्याल से everybody was pissed and students were like मुझे बहुत सारे calls आए थे सर बोलते सर ये क्या पूछ रहे हैं IIM K वाले ये क्या पूछ दिया. And I know they asked you something on COVID-19, some quadratic equation, something like that. Please tell us. It's very interesting. I will tell you my whole experience. पहले जाता बराबर उन्होंने मुझे पूछा कि yes you resigned last year. मैंने कहा हाँ. तो फिर CAT की एग्जाम इतनी डिफिकल्ट है कि आपको रिजाइन करना पड़ा. मैंने कहा नहीं, it is not that difficult. तो फिर वो सब नॉर्मल हो गया. First question they asked me on probability, and I really love maths, but the only thing I do not like in maths is probability and PMC. But उन्होंने मुझे probability पे ही पूछ लिया.
तो Okay. और वो भी स्टार्टिंग में, तो मैंने फिर ऑनेस्टली कहते कि सर आई डोंट नो अबाउट प्रोबेबिलिटी मच, तो मुझे नहीं आता है। मैं सेड ओके, देन बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस हुए। एक क्वेश्चन हुआ ये जो कोविड-19 का ना, उस वक्त आई रिमेम्बर देयर वर ओनली 76,000 केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड of Globally. this Okay. COVID-19. Yes. Okay. So Okay. they gave me one quadratic equation, and they asked me, see, this is this equation is for the drug of COVID-19, which can be helpful for people. So what will be the next amount for? What will be the next amount of drug generation from this equation? You have to calculate. I couldn't just get those questions. I think वो भी उतने क्लियर नहीं थे कि what exactly they wanted to ask. तो मैंने अपना कुछ डेरिवेटिव वगैरह लगा के ट्राई किया, तो उनको वो पसंद है कि हाँ शी इज ट्राइंग। आपने कहा था ना कि इवन दो यू Okay. डोंट नो आंसर बट यू कैन ट्राई Right. फॉर दैट। Absolutely. तो Absolutely. मैंने वो किया, एंड आई थिंक दे रियली लाइक अबाउट दैट थिंग कि हाँ ये बंदी ट्राई तो कर रही है, सॉल्व तो कर रही है, कुछ तो कर रही है। सो दैट्स हाउ आई थिंक दे इंटरव्यू के रियली बाद लाइक। लगा था IIM कन्वर्ट होगा? बिल्कुल नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वैट अच्छा हुआ था मेरा, वैट का टॉपिक वाज ऑन रिजर्वेशन, तो वो मैंने बहुत अच्छा लिखा था। उसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वैट बहुत तगड़ा लिखा है, एंड आई विल टेल यू कि क्यों अच्छा हुआ। लास्ट ईयर आई सेड कि मैं कैट के लिए तो प्रिपेयर कर ही रही थी, बट साइड बाय साइड आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अदर टॉपिक्स, लाइक मैंने एग्जाम्स भी, एंड एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू करंट अफेयर्स, ऑल द करंट अफेयर्स। Previously I wasn't interested in politics at all, बट लास्ट ईयर मैंने लास्ट ईयर इतने इलेक्शंस वगैरह भी हुए, तो उसकी वजह से पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट आया, पूरा पॉलिटिक्स का देखा। तो तभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल्स वगैरह देख के रखे थे, तो वो मुझे वैट पे बहुत काम में आया था। एंड और ऑल्सो मैं इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह भी वो भी देख रही थी, तो दैट मैं वही कहना चाहूंगी सबको कि इट्स नॉट जस्ट कि कैट का ही प्रिपरेशन करना है, यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर अदर थिंग्स। अगर इफ यू आर नॉट वर्किंग, यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर कैट, यू कैन गिव दिस टाइम टू अदर स्टडीज ऑल्सो। मीन्स थोड़ा पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स भी तुम लोग यू कैन प्रिपेयर, दैट विल रियली हेल्प यू इन, yes, that really helped me in GDPI. Honestly, that really helped me in this. Okay. What's your intended specialization? Is it finance or operation? अभी confusion है या sorted है? Right now I'm thinking about operations, but yeah, operations. Okay, cool. Any final tips for future MBA aspirants जो अभी CAT को prepare कर रहे हैं? Any final tip from your side? Confidence हो गया, motivation हो गया, preparation हो गया, anything? See, motivation के लिए सर आप हो, आपका आप तो मोटिवेशन में एकदम माहिर हो, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू से एनीथिंग फॉर दैट। बट हाँ, मैं स्टूडेंट्स को वही कहूंगी कि डोंट गेट सो, मींस यू कैन कीप योर एम हाई, टारगेट दोस कॉलेज इन व्हिच यू वांट टू गेट इन, तो वो अपना एक करके रखो, एंड टारगेट हमेशा हाई रखो, बिकॉज हाई टारगेट रहेगा तो यू विल वर्क ऑन दैट इन दैट सेम वे। ट्रू। एंड प्रिपरेशन ऑनेस्टली करो, एंड इट्स ओके कि इतना टेंशन लेने की जरूरत है। मैं तो ये कहती हूँ कि जमता होगा तो प्लीज सोशल मीडिया पूरा बंद कर दो। The only social media I was using was in YouTube. YouTube रखो। In fact, I wasn't even using WhatsApp. I just used WhatsApp just because of your classes. तो वो भी मैंने दूसरे नंबर से स्टार्ट कर दिया था। हाँ, because वो classes का notification WhatsApp पे आता है। That's right. तो मैं वही cool, yeah. Yes, it's a distraction. Just don't use those things. And have a discipline. Discipline actually helps you in achieving your goal. So discipline is must. So that's what I want to say. Awesome. So finally, IIMK is done. I'm very sure there are Lucknow, Vagara, other colleges also will be able to convert. But let's see. If you get anything above IIMK, we'll think about it. If not, then IIMK is something like finalized. I'm very sure you must have paid the fees also. So awesome, great stuff. Again, thank you so much for coming and joining for this live session. So thank you so much to you. And congratulations one more time. Get into IIMK, anything that is required. Like I say this to my all other students, like as a mentor, we will be always around. So yeah, like I'll help you sort of for CAT, but even eventually we will be there for you. So thank you so much for coming today.